हे गाइस, वेलकम बैक टू डिजाइन बाय मिशा। आज हम बात करने वाले हैं टीवी यूनिट्स के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको माइंड में रखनी चाहिए while designing a TV unit is to consider its functionality along with its aesthetic look। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप डिसाइड कर ले appropriate location और size of the TV unit as per the dimension of your room। अब बात आती है कि परफेक्ट लोकेशन कौन सी होती है टीवी यूनिट की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो डिपेंड करेगा ऑन द लेआउट ऑफ द फर्नीचर इन विच यू वांट टू प्लेस इट। तो सिटिंग अरेंजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यू कैन प्लेस द टीवी यूनिट इन वेरियस रूम्स लाइक लिविंग रूम, यू कैन प्लेस इट इन बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड इवन किचन्स, बट most preferably TV units are located in the living room and bedroom, right? So first we will going to talk about living room। अगर आपका लेआउट लिविंग रूम का प्लान लीनियर सिटिंग में है, देन लोकेट योर टीवी यूनिट ऑपोजिट टू अ लीनियर सोफा और सिटिंग फॉर अ गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द व्यूअर्स। और अगर आपके घर में L शेप सिटिंग लेआउट है, देन ट्राई टू प्रोवाइड अ टीवी यूनिट विच इज अलाइन्ड टू योर सिटिंग। लोकेट द टीवी यूनिट इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी व्यूअर कैन एक्सपीरियंस द बेस्ट व्यू ऑफ द टीवी, एंड इट कैन बी प्लेस्ड इन द सेंटर बट नॉट अलाइनिंग टुवर्ड्स एनी साइड। और अगर आपका घर यू शेप सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, देन बात ही क्या है, बिकॉज इट इज कंसिडर एज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट व्यू ऑफ द टीवी, एज सिटिंग एंगल्स प्रोवाइड अनरिस्ट्रेन्ड विजिबिलिटी टू व्यूअर्स। और अगर मैं बात करूँ पैरेलल सिटिंग लेआउट की, देन लोकेट द टीवी यूनिट अगेंस्ट द सेंटर रिब, दैट इज इन द फ्रंट ऑफ द वॉल लाइंग बिटवीन पैरेलल सिटिंग। और अगर आप डिसाइड कर रहे हो टू इंस्टॉल अ टीवी यूनिट फॉर योर बेडरूम, तब फैक्टर्स लाइक एरिया एंड व्यूइंग डिस्टेंस ऑफ द टीवी यूनिट फ्रॉम बेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपका बेडरूम नैरो एंड लॉन्ग है, then you can provide a TV unit on one wall, keeping in mind the viewing distance and aesthetic of the bedroom. You can even add storage cabinets in your TV unit so that you can hide your clutter inside, or else your TV unit can be part of your wardrobe. बस याद रखने वाली बात ये होगी कि you have to make the screen easy to view by putting it at eye level. For knowing the accurate height level of the TV unit, the thumb rule says that the center of the TV unit should always be at or just below your eye level. So at instance, if we think you will be sitting on a couch, the center of your TV should be typically 42 inches from the floor. And please avoid putting the TV in front of the windows or any place that will reflect sunlight, because it put unnecessary strain on the eyes. और एक परफेक्ट डिज़ाइन के लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि टीवी यूनिट का साइज क्या हो, उसका मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, उसका कलर एंड स्टोरेज हमें कितनी चाहिए। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि मटेरियल एंड कलर जो आप टीवी यूनिट के लिए सिलेक्ट करेंगे, वो आप अपने ओवरऑल डेकोर एंड थीम को कंसिडर करके ही सिलेक्ट कीजिएगा, वरना डिज़ाइनर टच तो नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि घर में ज़्यादा सामान है और जगह नहीं होगी पूरी टीवी यूनिट के लिए, तो फिर हो सके तो फंक्शनैलिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए आप बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा स्टोरेज कैबिनेट्स सो दैट इट विल कीप ऑल द थिंग्स हिडन एंड इवेंचुअली योर रूम विल लुक मोर नीट एंड क्लीन। If you keep these factors in mind, then definitely you can easily design your TV unit. And I hope this video helps you out in selecting the most suitable design of TV unit for your home.
If you found this video helpful while designing your TV unit, then do let us know. And don't forget to like this video and subscribe to my channel, Design by Misha. See you in the next video. Just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me